Good morning, my dear children. Today in this video, let's continue our chapter which is electric current and its effect. This chapter is in physics. In the last video lecture, we completed the introduction of magnetic effect of an electric current. Means when the current is passed through the circuit, at that time the magnetic field is being generated because of the electric current, which is known as magnetic effect of an electric current. Now, why this magnetic effect of an electric current generates? So, when the current is passed through it, so it is considered as a flow of charge. So, this flow of charge is going to create the magnetic field, and that's why it creates an effect named as magnetic effect of an electric current. Now today we are going to understand the electromagnet and magnetic effect in detail. So magnetic effect of an electric current was invented by the professor of Sweden, that is Hans Christian Ørsted, in 1880, and he has invented while performing the experiment based on heating effect of an electric current. At that time, he observed that when the current is passed through the circuit, the magnetic compass which was nearby the electric circuit, it was showing some deflection, and then he found out the effect of then he found the magnetic effect of an electric current. So he has written like in a manner that when an electric current passes through a conductor, a magnetic field is generated nearby the conductor, and it is called magnetic effect of an electric current. Now first let's see the recap of it. Okay, so already I told you the story related to the invention of magnetic effect of an electric current. Now in the last video we understood how to make an electromagnet. So for that we took one electric cell, then a wire and iron nail and some U-pins or safety pins. Now what we have to do? We have to first of all attach the electric cell with one end of the wire with the help of safety pin or sellotape, your choice. Then you have to wind this wire around the long iron nail. Now you have the rear end of the wire. This rear end of the wire, you have to attach it with the help of the negative terminal of the electric cell. So like this way your circuit get complete and the current will start flowing through it. So at that time this iron nail will act as a magnet, and the iron nail is considered as a electromagnet. Clear? Okay, so this thing we understood in the last video lecture. Now today we are going to understand about electromagnets in detail. So what is the definition of an electromagnet? So electromagnet definition is that it is a simply coil of insulated wire wound around a piece of magnetic substance. Magnetic substance means what? That the material which attracts towards a magnet are known as magnetic substances. For example, iron, for example, then nickel and cobalt. So they are considered as a magnetic substance. So if you wind the wire around the magnetic substance, then it acts as a magnet known as electromagnet. Now this electromagnet is only active when the current is passed through it. If there is no electric source, there is no magnetism will happen. There is no magnetism. So remember this thing. Generally in the last standard, 6th standard, we understood about magnets in Fun with Magnet chapter. So in that we understood that bar magnet is going to attract the magnetic substances every time. But over here the electromagnet is working only when the current flows through it. This is the difference between the bar magnet and electromagnet. Now we are moving to the next, that is, it is written the magnetic material around
which the coil is wound is called core. Look inside the diagram, you can see that one iron nail is there. So these iron nail is considered as a core, and surround the iron nail the wires are winding. So that is considered as a coil, or you can speak solenoid. Okay, so the wounded is considered as a solenoid or coil, and the magnetic substance around which the coil is there, so that is considered as a core. Okay, and in the last video also I spoke that if you choose magnetic substances as a core, then it will show more magnetism effect, means the magnetism get strengthened. But if you choose air as a core, or if you choose steel as a core, so at that time it is not going to show powerful magnetism. So make sure if you want to generate more magnetic effect, so at that time make sure that you will going to choose iron or magnetic substance, especially soft iron as a core. Moving to the next, that suppose this is the circuit. In it the positive terminal is attached with a wire which is going to coil the iron nail, and the other end is connected with a switch. Okay, now suppose if I will going to just change the direction of an electric cell, means I want to change the terminals of an electric cell. So if I will going to switch the terminals of an electric cell, means now the negative terminal is attached with a wire which will going to coil the iron nail, and the positive terminal will going to attach the one of the terminals of switch. So I have changed the terminals of then electric cell. So due to that reason, what will happen? The polarity of electromagnet is going to be changed. Imagine that right now the current situation is there as shown in the figure. So at that time, suppose this end, let me show you. Suppose this end is considered as a north and this end is considered as a south, right now in the current position. Okay, but what if you are going to change the terminals of electric cell? So at that time it will become like this way. ओके कि अगर आप सेल की टर्मिनल्स चेंज करते हो तो आपने देखा कि आयन नेल्स जो जब मैग्नेट की तरह एक्ट करता है उसकी भी पोलैरिटी है वो चेंज हो गई. इन द बार मैग्नेट वी यूज टू सी दैट उसके अंदर जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो कभी चेंज नहीं होता है, इट विल रिमेन एज इट इज़ फॉर एवर. बट ओवर हियर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इवन वी कैन चेंज द इलेक्ट्रिक पोल्स. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं. कैसे? बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल हो या हम बैटरी का यूज़ कर रहे हो. सो दिस थिंग इज कीपिंग इन माइंड. सो फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट. व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट, देन एंड देन इट विल एक्ट एज एन मैग्नेट. इफ द करंट इज नॉट पास थ्रू the core, so at that time it will behave like a normal iron nail. But if the current is passed through it, this iron nail become electromagnet and going to attract the magnetic substance like iron, nickel and cobalt. Second thing, we understood that usually the magnets are having permanent poles, that is north pole and south pole. But over here in electromagnet, we can change the poles of an electromagnet just by switch the terminals of an electric source. Now next thing, suppose I want to create or strengthen the magnetism which is going to be produced by passing through the electric current. So for that I have to keep three things in my mind so that we can easily strengthen the magnetism of an electromagnet. आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी कर सकते हो, या फिर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये तीनों चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हो. सो तीनों के तीनों भी एप्लीकेबल एक साथ कर सकते हो, या तीनों में से कोई एक भी एक साथ एप्लीकेबल कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग, इट इज़ रिटन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल.
अगर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब क्या, जो हम वायर को वाउंड करते हैं, सो वो नंबर ऑफ टर्न्स बोला जाता है. सपोज आयन नेल के थ्रू ओवर हियर इन द डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, टोटल 10 नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर. सो अगर इसको मैं डबल कर दूँ, लाइक 20 कर दूँ, इंस्टेड ऑफ 10 नंबर ऑफ टर्न्स मैं 20 कर दूँ, सो व्हाट विल हैपन. सपोज राइट नाउ अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो 10 नंबर ऑफ वाइंडिंग्स का है, वो शायद 2 या 3 यू पिन को अट्रैक्ट कर रहा है करंट पास होने के टाइम पे. तो अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स 10 की जगह पे 20 कर दिए हैं, सो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी कि माइट बी वो 2 या 3 यू पिन्स की जगह पे 7 to 8 यू पिन्स को अट्रैक्ट कर सकता है. Clear? Okay, so you see that if you increase the number of turns, the magnetic strength is increasing. Second thing that you can work on that is if you increase the amount of current flow. If you increase the amount of current flow, अब increase कैसे कर सकते हो? By suppose if you are right now, if you using one electric cell right now, so you can use a battery, means like combination of 2 electric cell or combination of 3 or 4 electric cell. Means if you increase the current capacity, the magnetism get also strengthened. Okay, और अगर आपको मैग्नेटिक कैपेसिटी कम करनी है, सो एट दैट टाइम यू हैव टू डिक्रीज द और लोअर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. मीन्स अगर 4 है तो उसकी जगह आपको 3 या 2 या सिर्फ 1 भी यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग. अ थर्ड थिंग इज़ देयर यूजिंग अ सॉफ्ट आयन कोर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू that for getting the magnetism you must have to choose magnetic substance so that it will going to show maximum result. Okay, so in the last video also I spoke about that we have done 3 activities. We took one steel nail, iron nail and normal reel of the thread. Okay, so in the reel of the thread there is nothing, so I can consider as a air. In the steel you understood, and in the iron. Now we are going to experiment with the help of the U pins. Okay, so after a completion of the experiment, you observe that the magnetic the iron core has attracted maximum number of U pins instead of the reel core and the second, that is steel core. So due to that reason you can consider that if you want to increase the magnetism of an electromagnet, then you must have to use soft iron core. So if you keep these 3 things in your mind, then definitely the magnetic power get increased. Okay, so first number of turns, second increasing the capacity of current flow, and third thing soft iron core. तीनों चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो टू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ओके, लोअर करने के लिए भी तीनों के तीनों साथ में भी यूज़ कर सकते हो, एंड तीनों में से कोई एक भी कर सकते हो. सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट, that is what is solenoid. So solenoid is a new term for you, but it is very easy to understand. Inside the diagram you can see that these are the number of turns, okay, which we use to wind around the core of around the core. Okay, so that winding is known as solenoid. So it is written a solenoid is a cylindrical coil of wire that act as a magnet when an electric current flows through it. मतलब जब करंट फ्लो होता है, ओके, सो दिस सिलेंड्रिकल कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट, सो दैट इज कंसिडर एज अ सोलेनॉइड. सिलेंड्रिकल कॉइल, ओके, 2 ही वर्ड में अगर बोलना हो सोलेनॉइड को तो क्या बोल सकते हैं? अ सिलेंड्रिकल कॉइल. इट इज़ नोन एज व्हाट? सोलेनॉइड. क्लियर? नेक्स्ट वन इज difference between bar magnet and an electromagnet. So total 4 points are there.
The first one is that bar magnet is completely permanent. It will always act as a magnet and it will going to follow the magnetic property always. While electromagnet will behave like a magnet when the current will pass through it. If the current is not passing through the circuit or through the core or through the wire, so it will remain as it is, normal substance, normal iron substance. But if the current is passed through it, it will behave like a magnet. So I can consider that it is a temporary magnet. Next one is second point, that its magnetic strength is fixed. बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा कैसी रहती है, फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. वाइल द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ कैन बी वेरी. अब कैसे वेरी करना है, जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड बाय concentrating on that three topics: number of turns of wire, second current capacity, and third as a core which material we are going to use. So by these three things we can change the magnetic strength of an electromagnet. Okay, next is bar magnet poles are fixed, north and south उसमें fix है, but we can change the polarity of an electromagnet by changing the terminals of an electric cell. Okay, so वो हो सकता है. अब क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, क्योंकि स्ट्रेंथ लिमिटेड है, क्योंकि पोल्स फिक्स है, इसलिए उसकी यूजेस, बार मैग्नेट की यूजेस भी कैसे है, लिमिटेड है फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस और सम अदर थिंग. बट इंस्टेड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ, we can change the polarity, we can use it whenever we need. So we just have to pass the current through it, elsewhere it will not behave like a magnet. So by these three speciality, by these three characteristic of an electromagnet, it has wide uses. Now what are the uses of an electromagnet, that we are going to understand. So basically यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अप्रॉक्सीमेटली अगर नॉर्मली डेली लाइफ में भी काउंट करो तो मिनिमम 10 हो जाएंगे. ओके, उससे भी ज़्यादा है. सो ओवर हियर यू कैन सी द फर्स्ट वन, दैट इज़ मैग्लेव ट्रेन. मैग्लेव ट्रेन को पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट ईयर साइंस फेयर रखा था. सो इन द साइंस फेयर 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने मैग्लेव ट्रेन का डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखाया था, छोटा सा मॉडल बना के दिखाया था. सो मैग्लेव ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर काम करती है. कैसे करती है, दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड लेटर. ओके, सो वो भी उसमें क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं. सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, अब इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक परमानेंट मैग्नेट भी होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है. Or based on that you can easily able to understand how motor works. So these things you will going to understand in the 10th standard. Okay, over here not only just a motor, but I will going to add stator of the motor. Second thing, the generator also. Okay, so generator and motor both are going to use electromagnet. The third diagram is there. This is a scrap yard. Over here, to just collect the magnetic substances, especially iron substances, they are going to use a crane which is having an huge circular electromagnet. ओके, जब उनको कोई भी चीज़ पहले वो लीवर को पुश करते हैं और नीचे तक ले आते हैं स्क्रैप यार्ड के बीचों बीच, फिर वो लोग लीवर को ऑन करते हैं. ड्यू टू दैट रीज़न द करंट विल पास थ्रू दिस सिलिंड्रिकल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, सो वो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करती है और सारी आयन की चीज़ों को अट्रैक्ट करके उसको हम एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं. ओके, जब आपको उसको रखना है एट दैट टाइम आपको लीवर ऑफ की तरह करना है, करंट विल कट ऑफ and the remaining device which was attracted by electromagnet, it will going to just release from that. So like this way in the scrap yard for collecting iron substances we are using electromagnet.
Last but not the least, over here it is mentioned about speakers. ओके, स्पीकर्स में सारे आ गए. आप ब्लूटूथ स्पीकर की बात कर रहे हो या नॉर्मल स्पीकर, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हेडफोन और ईयरफोन, सारी चीज़ों के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है. ओके, ये 4 यूजेस है. अलॉन्ग विथ दैट सम अदर यूजेस आर देयर, दैट इज़ वीडियो टेप रिकॉर्डर. ओके, पहले के टाइम में डीवीडी आती थी, सीडी आती, देन छोटे से वो कैसेट्स आती थी जिसके अंदर मैग्नेटिक फिल्म होती थी. सो वो वीडियो ऑडियो टैप रिकॉर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता था. मोबाइल फोन्स इज़ हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. टेलीविजन्स, you know, MRI. Now what is this MRI? For if you have any head injury, okay, so at that time the doctors are going to send you for the MRI test. MRI टेस्ट के अंदर क्या होता है, वो पूरा एक स्पेशल रूम होता है जिसके अंदर एक ह्यूज सर्कुलर चीज़ होती है कि जिसके अंदर आपको सुला दिया जाता है और आप उसके अंदर जाते हो और आपके दिमाग के सारी चीज़ों का अच्छे से प्रॉपरली उसका मतलब डायग्नोसिस होता है. वो डायग्नोसिस से पता चलता है कि आपकी इंजरी मेजर है या माइनर है या क्या मेंटल स्टेटस में प्रॉब्लम है. तो ये सारी चीज़ों के लिए MRI का यूज़ होता है. सो यू सी दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत सारे यूजेस हैं. ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू इट. नेक्स्ट टाइम आई विल गोइंग टू tell you about one of the application of an electromagnet, that is electric bell. So हम next time लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग एंड स्ट्रक्चर है वो दोनों पढ़ेंगे. ओके, टिल देन जस्ट कीप स्माइलिंग, लुक फॉरवर्ड अबाउट electromagnets. Have a nice day. Bye.